अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इन टुडेज़ वीडियो हम बात करने वाले हैं अबाउट अप्लाइंग टू मास्टर्स प्रोग्राम्स एंड स्कॉलरशिप्स इंटरनेशनल। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि यू हैव टू डिसाइड व्हाट प्रोग्राम और प्रोग्राम्स यू आर अप्लाइंग फॉर. To do that, obviously think about your own bachelor's degree, think about your interests and also think कि क्या चीज़ें आजकल दुनिया में बहुत relevant हैं, because the world is evolving so fast. It's always good to know कि कौन से programs नए हैं और कौन से programs ऐसे हैं जो अब थोड़े obsolete होते जा रहे हैं. So talk to colleagues, talk to your professors, talk to other students, and that will give you a good idea of what it is that you want to do your masters in. Now once you decide कि आपने किस चीज़ में मास्टर्स करना है, the next step is to actually find the universities that offer those programs. An easy way to do this is to go to a website called QS Rankings, और इसमें ये होता है कि आपके हर डिग्री के हिसाब से पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स होती हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ माय डिग्री वाज पॉलिटिकल साइंस, तो मैं इसकी सर्च में लिखूँगी पॉलिटिकल साइंस एंड इट विल गिव मी ऑल द यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500 जो पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्रीज ऑफर करती हैं. और फिर QS रैंकिंग से मैं हर यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअल वेबसाइट पे जा सकती हूँ. नाउ व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द रैंकिंग ऑफ योर यूनिवर्सिटी इज़ सो दैट यू नो कि आपका कितना अच्छा या बुरा चांस है ऑफ गेटिंग इनटू अ यूनिवर्सिटी. इफ़ यू हैव एन एवरेज प्रोफाइल यू माइट नॉट हैव 100% चांस ऑफ गेटिंग इनटू एन Ivy League, but a middle ranked university you could have a better chance of getting into. So it's important to know the ranking of your university. एक और चीज़ जो याद रखनी ज़रूरी है वो ये है कि अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हाई है, इसका ये मतलब नहीं कि आपके प्रोग्राम की भी रैंकिंग हाई है. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली लुक एट योर प्रोग्राम रैंकिंग्स, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर प्रोग्राम जहाँ पे आपको पढ़ना है, एंड यू डोंट वांट टू गो टू अ प्रोग्राम दैट you feel is not the best for you. Now when choosing the number of universities you can apply to, there is no upper limit. आप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, but realistically that's a very ambitious project. I would say whatever number you decide on, divide it into 3 parts. So for example, अगर आपने 9 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, उसमें से 3 ऐसी हों जो आपकी टॉप ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड दीज कैन बी ऑब्वियसली द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ इन योर फील्ड. The next 3 should be universities जिनका प्रोफाइल आप बहुत अच्छी तरह से फिट करते हैं. Feel very confident applying to those universities. You feel you have a good chance to get in. And the last 3 universities should be your backup universities. So universities that you feel you have a very good chance of getting into, ताकि अगर आपका टॉप 6 में नहीं होता, इन 3 में से किसी ना किसी में ज़रूर हो जाए एडमिशन and you're still able to go for your masters. An efficient way to keep track of all these universities is to simply make an Excel sheet, a simple one जिसमें आप यूनिवर्सिटी का नाम, प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम की डेडलाइन ज़रूर लिखें, बिकॉज हर किसी की डेडलाइन डिफरेंट होती है. एंड देन यू कैन ऐड अ लिंक टू द प्रोग्राम वेबसाइट एंड ऑल्सो द रिक्वायरमेंट्स. नाउ यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स आर जनरली प्रीटी स्टैंडर्ड. यू विल नीड रेफरेंस लेटर्स फ्रॉम योर प्रोफेसर्स, या अगर आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयर्स के भी हो सकते हैं. इसके अलावा स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होती है. फॉर द US यू माइट नीड GRE और GMAT. फॉर अदर कंट्रीज दे हैव अदर रिक्वायरमेंट्स. For to come to Germany you usually need A1 level German. To go to England you need IELTS. इसके अलावा they might ask for a CV or a statement of purpose. ये सब requirements हमेशा हर प्रोग्राम की वेबसाइट पे बहुत clearly लिखी हुई होती हैं, एंड इसमें 19-20 का ही फ़र्क होता है. सो इट्स इंपॉर्टेंट when you start out applying कि आपने ऑलरेडी अपने प्रोफेसर से बात कर ली हो for references. इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आपने जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट देने हैं वो आप इस प्रोसेस के शुरू में ही दे दें, so that they're well out of the way, so that when the deadlines come you are not running around trying to give those exams. And then deadlines really vary depending on आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बट ऑल्सो कौन से सेमेस्टर में जाना चाह रहे हैं. सो फॉल की डेडलाइन और स्प्रिंग की डेडलाइंस बिल्कुल फ़र्क होती हैं. सो व्हाट यू शुड डू इज़ ऑर्गेनाइज योर यूनिवर्सिटी लिस्ट बाय डेडलाइन. तो फॉर एग्जांपल जिसकी सबसे पहले है सेफ 15 सितंबर को जो डेडलाइन है, वो यूनिवर्सिटी को आप टॉप पे डालें. उसके बाद अगर 1 अक्टूबर है उसको डालें, देन 12 अक्टूबर, एंड इस तरह एक टाइम वाइज आप करें ताकि आपको याद रहे कि ओके दिस इज़ द यूनिवर्सिटी आई एम अप्लाइंग टू नेक्स्ट एंड दिस. व्हेन यू आर अप्लाइंग नेवर लीव थिंग्स फॉर द लास्ट मिनट, बिकॉज यू डोंट नो कि इंटरनेट का कोई मसला हो जाए या कोई और चीज़ हो जाए. सो इफ़ द डेडलाइन इज़ 15 September, गिव योर सेल्फ अ डेडलाइन फॉर 1 September, so you have ample time in case something goes wrong. This is so important. फॉर रेफरेंस लेटर्स मेक श्योर कि आपके जो प्रोफेसर्स लेटर लिख रहे हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हों, एंड ऑल्सो दे नो व्हाट प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग टू, सो दैट द लेटर दे राइट caters to that specific program and they don't end up writing something very generic. For the statement of purpose I would also say get a friend or a colleague to read it once or twice so they can give you your feedback. आप लिखें ज़रूर खुद, मगर आप उनको एक दफ़ा ज़रूर दिखाएं उनकी फीडबैक के लिए, and based on that you can make edits. The reason why it's important to write it yourself is क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा ऑब्वियसली वो इसी चीज़ पे बेस्ड होगा कि आपने उसमें लिखा क्या था, एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू रोट देन दैट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग. अब ये तो बात हो गई यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम्स की.
अब बातें हैं स्कॉलरशिप्स पे। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की अपनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल द यूनिवर्सिटी आई वेंट टू, इट्स कॉल्ड सोएस। तो अगर मैं गूगल पे ही टाइप करूँ सोएस मास्टर्स स्कॉलरशिप्स, आई विल फाइंड द लिंक टू अ पेज जिस पे सारी की सारी स्कॉलरशिप्स लिस्टेड होंगी सोएस की। The problem with these scholarships is they are not always fully funded, so and इन सब की different requirements होती हैं। So for example कुछ scholarships कुछ countries के लोगों के लिए होती हैं, कुछ scholarships एक certain age के लोगों के लिए होती हैं या एक certain background के लोगों के लिए होती हैं। So you have to go through them and figure out कि आप कौन सी scholarships के लिए eligible हैं। Generally scholarships की deadlines की भी सारी requirements websites पे लिखी हुई होती हैं, so this should be pretty straightforward. But of course if you have any questions you can also email the university. The other thing you can do is एक्चुअली अप्लाई फॉर एन एक्सटर्नल स्कॉलरशिप। इस केस में आप यूनिवर्सिटी में अलग से दाखिला लेते हैं और आप स्कॉलरशिप के लिए अलग से अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल द स्कॉलरशिप आई गॉट फॉर माई मास्टर्स इज कॉल्ड द शिवनिंग स्कॉलरशिप, और वो एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है जिसमें आपको एक स्टाइपेंड भी मिलता है, सो योर लिविंग अलाउंसेज आर ऑल्सो कवर्ड इन दैट. So now what I recommend doing is looking for these big externally funded scholarships in all the countries that you want to apply to. मैं कुछ links भी नीचे डाल रही हूँ for the major scholarship programs that I know of, so do check them out. Generally ये scholarships बहुत से different disciplines के लिए होती हैं, so most people will be eligible to apply for them, and a lot of them also don't have age limits. Again for these scholarships I recommend making an Excel sheet, and again deadline wise ताकि जैसे ही deadline करीब आए आपको पता हो this is the scholarship I am applying for. Similar to university requirements, all scholarships also have their own requirements, but yes requirements भी similar होती हैं. So you need a CV, you need reference letters, they might have some questions or essays for you to fill out, और इसके अलावा उनको transcript चाहिए होती हैं, standardized testing. So if you have all these things in place then it's not a big deal applying for so many different scholarships. Now one question I keep getting is, do grades matter more or do extracurriculars matter more? As far as I understand, most scholarships are actually looking for leaders and change makers. तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ग्रेड्स को देखते हैं या वो सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर्स को देखते हैं. दे लुक एट योर एंटायर प्रोफाइल. सो एज लॉन्ग एज आपने कोई रेलिवेंट काम किया है उस फील्ड में जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, दैट कैन बी अ स्टूडेंट जॉब, दैट कैन बी एन इंटर्नशिप, दैट कैन बी अ पार्ट टाइम जॉब, दैट कैन इवन बी अ स्टूडेंट सोसाइटी दैट यू बिन अ पार्ट ऑफ. It should be fine. As far as GPA is concerned, some scholarships do have a cut-off GPA. उससे कम अगर आपका GPA हो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते. But generally a person with an average GPA but an overall good profile has a good chance of getting in. In my case for example मेरा GPA बहुत ज़बरदस्त नहीं है, but I did have a lot of extra curriculars and a lot of work experience relevant to the field that I wanted to go in. For example, the year that I got the scholarship, pretty much everyone from my university who got the scholarship, I would say we were above average students, but people who had a good profile overall. तो बहुत से extra curriculars थे, work experience था, internships थी उन fields में जिनमें हम जाना चाह रहे थे. And those are the things that scholarships look at, because ultimately they want to know कि आप जो degree लेंगे उससे larger society को क्या फ़ायदा होगा. Why should they be funding your degree? So I would say, if your grades are not the best, that's okay. You just have to make sure your overall profile is well rounded and it's relevant to the field that you want to apply in. Now some people had asked if they should do this whole process themselves or go through educational consultants. I think as long as you have Google at your hands, you really don't need anyone else's help. इसमें कोई rocket science नहीं है, ये पूरा process इतना आसान है, and obviously the way that you write your statement no one else will, the way that you know your profile no one else does, the way that you are able to choose the best programs for yourself no one else will be. That being said, if you do feel, if you are really struggling, it's also okay to get some help from an educational consultancy. लेकिन I would really suggest कि at least basic research आप खुद करें, and if you feel overwhelmed, that's when you should reach out for help. A lot of women had also asked कि हमने gap ले लिया था when we had kids or got married and now we want to go back into studying. Now the thing that you have to remember is you have to justify why you should get into the program. You have to make a good case for yourself. It doesn't matter what your skills are, what your background is, as long as you're able to make a good case for why you should get into the program. As long as you're able to demonstrate कि आप में वो qualities हैं और वो skills हैं जो required हैं उस program के लिए, there's no reason why this should hold you back. So I would say definitely apply, and like I said, apply to dream schools, apply to schools you have a good chance in, and apply to backup schools. And if you don't get into your dream school, it's fine, go to your backup school. It's important to start from somewhere at least. I also got a lot of questions about visas. Unfortunately visa situation हर country की different होती है, so I really cannot comment on it. One thing I will say is get all your documents ready way before time, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से apply कर रहे होते हैं, visas generally do tend to take time. I hope you guys found this video useful. The purpose of this video is just to remind you guys that applying for masters and scholarships is a fairly simple process. All you need is to do a bit of research and be organized, and आप ये बहुत आराम से कर सकते हैं.
So there's no reason why you should be worried and think this is too difficult and I can't do it. You absolutely can do it, and you should do it, because like I said in my last video, the exposure that comes from living and studying in another, and like I said in my last video, you definitely should do it, because the exposure that comes from living and studying in another country, वो obviously आपको अपने environment में रह के नहीं मिल सकता. That being said, I am just going to wish you guys good luck if you are applying. और अगर कोई questions रह गई हों, please leave them in the comment box down below. Thank you so much for watching. I'm going to see you next time. Bye.